गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन, दिस इज मी उज़ैर हसन एंड आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग शो ट्रांसमिशन, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मॉर्निंग शो ट्रांसमिशन इनफैक्ट ऑन द बिगेस्ट साउथ एशियन टीवी नेटवर्क। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग विद NTV ह्यूस्टन विद योर होस्ट उज़ैर हसन। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय किंग्स कंस्ट्रक्शन, स्पाइस्ड अप बाय मलका फूड्स एंड फ्रेशनड अप बाय फ्रूटोज द जूस ब्रांड, जिसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मलका फूड्स के बारे में अगर बात करें सो देयर आर न्यूमरस रेसिपीज़ जो आप बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मलका फूड्स के स्पाइसेस विच इज़ ग्लूटेन फ्री, MSG फ्री, जिससे आपको पर्टिकुलरली वो फीलिंग नहीं आएगी व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पाइसेस। तो देयर इज़ अ पॉइंट इन योर लाइफ कि आपको थोड़ी सी जो है इरिटेशन शुरू हो जाती है एंड यू हैव टू कंज्यूम एक्स्ट्रा वाटर फॉर दैट। उस चीज़ से ये बिल्कुल फ्री हैं, सो डू गिव इट अ ट्राई। राइट नाउ कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, एंड आज की जो प्रोग्राम के हवाले से इफ़ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस द डिजीज़ दैट इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स टोटली। ये डिजीज़ स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द सिटी इन चाइना, वुहान, WUHAN वुहान, बिकॉज इसकी डिफरेंट सिटीज़ हैं जो कि कंपैरेटिवली सेम प्रोनाउंसिएशन में सेम लगती हैं। दैट इज़ द सेम सिटी बट इट्स द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ दिस डिजीज़ वाज वुहान। वुहान फेमस है बिकॉज इट्स इन सेंट्रल चाइना एंड यहाँ से ये डिजीज़ जो है राइज हुई एंड इसके साथ साथ द पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ वैक्सीन्स और इसकी अभी तक जो है पर्टिकुलरली कोई रेमेडी अभी तक नहीं आई है। देयर आर न्यूमरस डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड ट्राइंग टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर डिजीज़ एज वेल, लेकिन काफ़ी हद तक इट सीम्स टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देयर आर न्यूमरस केसेस कमिंग अप, थोड़ा सा इसके मुतालिक की बात करेंगे। फॉर नाउ वी हैव दिस फर्स्ट वीडियो फॉर यू गाइज जो कि बनाई है सम स्टूडेंट्स लिविंग इन वुहान सिटी, जिनको बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया गया एक तरीके से एंड दे आर आउट ऑफ सप्लाइज एज वेल राइट नाउ। द फूड सप्लाइज एंड मार्केट्स एंड जितनी भी रोड्स हैं सबको ब्लॉक कर दिया गया है। द मॉल्स आर क्लोज, द मार्केट्स आर क्लोज, everyone seems to be scared and ये जो students हैं, there is a group of 25 to 30 students who are trapped inside their university and college, जिनको एक बिल्कुल अलग एक जगह पे रखा गया है and they are clearing the misconceptions about the Wuhan city। कुछ लोगों को लग रहा है कि वुहान सिटी से ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों को लग रहा है ये वीडियो पुरानी है। so that's how they are clearing out कि किस तरह उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। द वीडियो इज़ लॉन्ग, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 मिनट, लेकिन उसका जो कुछ सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा। आई वांट यू गाइस टू गो एंड वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। वीडियो के बाद वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड। लेट्स गो एंड वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम, हम सब होबे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारी यूनिवर्सिटी शांगयांग में है और ये यूनिवर्सिटी वुहान से 2 या 3 घंटे के फासले पर है। ये जो वायरस वुहान से स्टार्ट हुआ है, वुहान से स्टार्ट होकर हमारी सिटी तक पहुंचा है। वैसे तो अमूमन जो भी न्यूज पाकिस्तान में आ रही है सब ये कह रहे हैं वुहान में इन्फेक्शन ये वो, पर लोग ये भूल जाते हैं कि इसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी सिटी भी इन्फेक्टेड है। हमारे स्टूडेंट्स को कोई ले नहीं रहा, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। सारी आवाम यही कह रही है कि वुहान के स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड है, ये वो। वहां की इमदाद तो छोड़ो, हमारी भी दूर दूर तक कोई भी इमदाद नहीं कर रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 100 के करीब है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि इन्हें खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हालांकि ऐसी कोई खबर सच दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसका सच से। हमारे पास अपना जो खाना है वही मौजूद है और वो भी पता नहीं कब तक मौजूद है। एक लिमिटेड अमाउंट में खाना हमारे पास सबके पास जो हम खा रहे हैं फिलहाल और गुजारा कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि कोई मॉल वगैरह ओपन भी हो तो हम इंटरेक्शन करेंगे चाइनीज लोगों से, और चाइनीज में ही ये वायरस है ज्यादातर, क्योंकि वो खाते हैं ऐसी चीजें, जानवर वगैरह सारे वाइल्ड एनिमल खाते हैं। और कुछ वीडियोस ऐसी भी वायरल हो रही हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि ये सारी मार्केट्स इसलिए बंद है क्योंकि ये न्यू ईयर है, पर न्यू ईयर खत्म हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी ने कोई शॉप नहीं खोली। 1-2 अगर शॉप खुलेंगी भी तो इतनी एक्सपेंसिव वो चीजें दे रहे हैं। हम लोग खुद यहाँ पे स्टूडेंट है, अगर सब्जी आपको सोने के रेट पे मिलने लग जाएगी हम क्या करेंगे। एम्बेसी से हमने राब्ता किया है, अव्वल तो वो फोन नहीं उठाते। हमने काफी दफा ट्राई किया, 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठाते। अगर फोन किसी का उठा भी लें तो बहुत बुरी तरह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट ने जो हुक्म देना है हम वो करेंगे। एम्बेसी का कहना यह है।
वेलकम बैक आफ्टर दिस वीडियो। कुछ जो क्लिप्स आपको दिखाए गए, एवरीवन इज़ वेयरिंग मास्क इन दिस वीडियो एंड मास्क पहनने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं। एंड एक जो पॉइंट डेफिनेटली जो इस वीडियो के अंदर रेस किया गया है कि दे आर आउट ऑफ सप्लाईज। इनिशियली जब वो एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे आर नॉट हेल्पिंग देम एज वेल। एंड इसके साथ साथ कुछ मार्केट्स जो हैं वहाँ पे बहुत थोड़ी देर के लिए खुल रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ the amount they are charging, it's almost next to impossible for students especially to pay for basic needs of vegetables. तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में हम आज अपना प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ there are certain myths associated to द कोरोना वायरस। एक जो चीज़ इसके सिमिलरली नज़र आई है, एंड अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेज इट्स बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग द बैट मीट और एनी फॉर्म ऑफ बैट। You know the procedure, how the bat works, especially जिन लोगों को नहीं पता है तो there are certain animals who are designed in a way कि उनके अंदर toxic material बहुत ज़्यादा होता है। There are certain animals जो कि आप बिल्कुल खा सकते हैं and they are not harmful enough, लेकिन ये जो particular disease है there are certain sources it clearly states that it's because of the consumption of bat, चाहे वो bat soup के फॉर्म में हो, चाहे वो bat जो है मीट के फॉर्म में हो, and because of the respiratory system और जब आप उसकी जो उसका एक प्रोसीजर है, इवन व्हेन दे आर कंज्यूमिंग द बैट कंज्यूम्स फूड, एंड जब वो उसको एक ही पर्टिकुलरली दे आर ईटिंग द फूड फ्रॉम माउथ एंड दे आर डिस्पोजिंग द फूड आउट ऑफ द माउथ एज वेल, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉक्सिक थिंग राइट नाउ। एंड इससे रिलेटेड एक मूवी भी नॉट रिसेंटली बट इट वॉज रिलीज इन 2011, एंड 2011 के अंदर जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, सो इट वॉज इट क्लियरली शोज दैट द डिसीज स्प्रेड इन चाइना। एंड डिज़ीज़ जब स्प्रेड हुई चाइना के अंदर तो किस तरह ये वाली एक जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी, एंड इट वाज स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड इट वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड एज वेल। एंड ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर मूवी जो उसका प्लॉट था, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि इट्स बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग बैट। आई वॉन्ट यू गाइज, अगर कुछ लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी, आई डोंट नो द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, कंटेजियन इज़ द मूवी नेम आई गेस सो। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू गो, एंड इसका ट्रेलर हम आपको प्ले करके दिखा रहे हैं जो थोड़ा सा आपको अभी के जो सिनेरियो है, जो वर्ल्ड लीडर्स एंड पीपल आर टेंस एंड क्या हो रहा है इसके बाद, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल, एंड व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर्स एंड द प्रिवेंशन मेजर्स टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। आई वांट यू गाइज टू गो एंड वॉच द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी। Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. वेलकम बैक आफ्टर दिस वीडियो, एंड इट्स सो रिलेटेबल कि अभी आपको अपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी ये मैसेजेस में ये वीडियो एंड इसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी। एंड प्रिवेंशन की हम बात करते बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो कि क्या प्रिवेंशन हो रही है। इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन फ्लाइट्स, इवन कैथे पैसिफिक लुफ्थांसा ने अपनी सर्टेन फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं विच वर मूविंग एंड विच वर फ्लाइंग ऑल द वे टू चाइना to prevent them, and certain countries के अंदर, for example in Pakistan, as you know that there is huge integration of Chinese people in the country, इस पर्टिकुलर डिजीज़ को रोकना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। सो एन स्पेशल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट to do the scanning before क्योंकि recently Chinese New Year गुजरा था and people were on vacations, and as they are coming back to the country, so they might be risk to have that particular disease. So हर कोई ट्राई कर रहा है, and we really hope कि इसका जल्द से जल्द solution निकले and China is not isolated from the other countries as well. अब बात करेंगे एक recent रिपोर्ट की Lamborghini के हवाले से, एंड Lamborghini recently launched its new model in India, एंड इंडिया के अंदर जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है विट्स अ रिवर्स व्हील ड्राइव
and Lamborghini Huracan is the name of the car that they have recently launched. And इसकी opening जो ceremony थी उसकी कुछ pictures, some of the detailed pictures we have for you guys as well. I want you guys कि ये जाके तस्वीरें देखिए, इसके बाद वापस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या प्राइस है, एंड देन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द अपकमिंग गेस्ट एज वेल. मिलवाएंगे उनको ब्रेक के बाद, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन अभी देंगे. लेट्स गो एंड वॉच दिस. वेलकम बैक आफ्टर दिस स्लाइड शो बेसिकली, क्योंकि तस्वीरों का हमने कोलाज आपके लिए बनाया था. एंड इसकी प्राइस अगर इंडियन रुपीस में देखी जाए तो इट्स अराउंड 3.27 करोर्स, एंड डेफिनेटली इट्स एन अमाउंट टू बी टेकन केयर ऑफ पर्टिकुलरली. अब हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ. यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद NTV ह्यूस्टन. दिस इज मी ज़ैर हसन. ब्रेक के बाद जो हमें गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं उनसे आपको डेफिनेटली मिलवाएंगे. लेट्स टेक अ ब्रेक. शुगरलैंड में आ रहा है अलरब्बा वर्ल्ड फूड. 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन. लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे. अलरब्बा offers retail space for all businesses. Alrabba World Foods. For more information, call Amir Ali at 512-652-8462. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार. हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल. आ गए नई मलका रेसिपी मसाले, खालिस और बेहतरीन अज्जा, मुनफरिद जायका, नो एडेड MSG और ग्लूटेन से महफूज. लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई. मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल. आज तो कमाल कर दिया. कमाल तो मलका ने किया है. तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका. मलका, कुछ नया पकाओ. The 2019 Model Year in event now at Ron Carter Cadillac has been worth the wait. Enjoy our lowest payments of the year. Sign and drive new 2019 Escalade Premium Luxury for just $899 a month, or 39-month lease with just $1 down, or get 0.9% APR for 72 months. Or loyal Cadillac and competitive model owners receive $18,000 in savings. Your only Houston area Cadillac to your door dealer. RonCarterCadillac.com. When it comes to protecting yourself and your partners, all the information out there can be overwhelming. Visit our website. We are a free and confidential service, striving to help you stay informed and stay notified. We are committed to a healthy Houston. मनपसंद सुपरमार्केट, जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी, और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा. दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद. लोकेटेड एट विलक्रिस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव, ऑस्टिन, टेक्सास. तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट. डुबकी लगा ससीटो का मजा बड़ा. ससीटो टोमेटो केचप, मजे की डुबकी.
Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston with your host Uzair Hassan. This episode is brought to you by King's Construction, spiced up by Malka Foods and freshened up by Fruitos. In today's episode, जैसा हमने आपको break पे जाने से पहले बताया था about our upcoming guest who is going to be on the set of GMN TV. The reason for inviting him over here is, the reason for us to invite him particularly over here is, it's because of his tremendous support to humanity and किस तरह वो इतने अरसे से यहाँ पर हैं and how his experience turned out to be that motivated him कि अब वो जाके participate कर रहे हैं and he is running for the Texas State Representative District 26. So without any further ado, उनको मिलवाने से पहले I want you guys to go and watch this video पहले. थोड़ा सा ट्विस्ट रखते हैं उनको मिलवाने से पहले. I want you guys to go and watch this video. वीडियो के बाद वापस आएंगे. Dr. Suleiman Lalani is going to be on the set of GMN TV. Let's go and watch this. Welcome back after the video and after watching these pictures and जो slide show है and जो package है उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा idea हुआ होगा कि why he is standing for this position as well. And without any further delay, let me introduce you to Dr. Suleiman Lalani. Hello Dr. Suleiman, कैसे हैं आप? Good, I'm very well. Thank you for inviting me. I'm very happy, pleased to be here. Thank you so much once again for joining us. Dr. Suleiman, tell us about particularly your experience up till now in United States. You have graduated, आप जो run कर रहे हैं आप इस campaign के अंदर. Tell us about a little journey कि किस तरह आप इसे decide किया to be part of this program. So, Bhaiya, I'm very much like a lot of our viewers who has come here for the American dream. I got my medical school back home. Uske baad I came here and I did my internal medicine residency in New York. And then I've done my fellowship at Baylor. That made me come to Houston. Okay. I've also attended courses at Harvard and Columbia. So I've been in practice for the last 20 years. And my specialty is geriatrics, which is opposite of pediatrics. So I see a lot of senior people. So in 20 years of my practice, I've seen consequences of our poor healthcare access system. I have seen the human face of our healthcare system failure every day. I've seen enough that Miss Fatima, 90-year-old, who unfortunately came with stroke to the hospital because she could not get her medication on time. I've seen enough Joes and Jones and Muhammads who has getting their leg amputation, or they're getting blind, or they're getting into dialysis because their blood diabetes was not under control. They couldn't afford insulin, or उनका blood sugar 300-400 चल रहा था. Oh my God. Or they got into complication. I've seen enough people who are actually working 14 hours, still unable to afford healthcare. और जब उनको तकलीफ होती है, कोई बीमारी आती है, वो ड्रैग करते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते. Yeah. इन्फेक्शन छोटा सा हुआ, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, वो इन्फेक्शन बोन्स में चला गया. अब वो osteomyelitis जिसको हम कहते हैं हो गया, which is worse, and then it ended up cutting their leg. So that hurts. You know, as a physician, we are trained to help people. We are trained to save lives. है ना? अगर and healthcare is like 24/7. I mean, people take off, but doctors are rounding on Christmas, doctors are rounding on Diwali, doctors are rounding on Eid. हो रहा है रोज. हमको रात को middle of the night call आता है, हम जाके treatment के लिए भागते हैं, right? So we are helping people. But जब इस तरह की चीजें होती है कि which is manageable, और system failure की वजह से नहीं होती है, तो it hurts a whole lot. Definitely, Dr. Saab, with that, an additional question to that, the 3 drawbacks जो आपने अभी तक notice किए हैं, especially जिसको consideration की ज़रूरत है, maybe somehow there are different people coming up, it's in positions पे बैठे हैं, but you have seen that they are not specifically working on these 2 to 3 things जो आपने identify किए. देखिए, healthcare access is the biggest problem here. Okay. This is no secret कि हम trillions of dollars healthcare में spend कर रहे हैं, right? और अगर आपको मैं पूछूं या मैं अपने आपके viewers को ये पूछूं कि भैया, do you know anybody in your family or your friend circle who has come to America for treatment? I would say most of the people will say yes, मैं जानता हूँ कोई आया था. ठीक है ना? इसका मतलब है कि we have the world class institution because I've been trained at world class institutions, so I know that.
ठीक है ना? But when it comes to access to our people, those people unfortunately cannot cross the street and get into the system. So they are getting into complications which are easily prevented. मैं कहता हूँ we are getting penny wise and pound foolish in our healthcare system. Of course. We need to be more proactive than reactive. हम healthcare की जगह sick care चला रहे हैं. जी. लोग बीमार होके फिर परेशान होके आते हैं, उसको हम केयर करते हैं. आपको कोई भी हॉस्पिटल उठा के आप देख लीजिए यहाँ पे शहर में, I can bet you कि 50% or more people do not belong there on that emergency room. So according to you, basically कि किसी न किसी की वजह से the rights of the actual people are getting harmed या वो थोड़े से affect हो रहे हैं. The different people actually taking their places जो उनको patient होना चाहिए था. Is that something? No, I think it's main source is funding. At the end of the day, हर चीज़ गोल घूम के funding पे आती है. जी. And then we have the money, but I think we need more smart people who focus on these basic issues and reshuffle that basket. कि trillions of dollars हम खर्चा कर ही रहे हैं, right? जी. और जैसा दूसरा example है कि state of Texas ने last time Medicaid expansion they didn't go for it. Yeah. $10 billion with the B, not with M. $10 billion was lost on the table. We have been part of the Alzheimer's Association as well, and a major and integral part as well. Tell us about that कि आपका experience वहाँ कैसा था, and with that do that motivated you कि आपको इस field में थोड़ा सा आना चाहिए and to run particularly because it's a very big step you actually decided to, and you are actually representing a large sum of people as well, so you have a responsibility now. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. So Alzheimer's is my special interest and also my passion because I see a lot of my patients who suffer from some kind of dementia. In fact, when I was in training many years ago, I was told that 5% of the people over the age of 65 has some kind of memory issue, and it doubles itself every 5 years. So by the time people reach the age of 85, it's 1 in 2. Okay. Yet there is no cure yet. Every 66 seconds, somebody is affected by some memory issues in America. So by the time our program will finish, number of people, new people will be affected. डॉक्टर साहब, इस कोई एक पर्टिकुलर रीजन जिसको आपको लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द टेंशन, बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, व्हाट व्हाई इज इट सो कि रेट इंक्रीज हो रहा है खास तौर से स्टेट्स में? सी एक तो वो है ना लॉन्जेटिविटी है कि पीपल आर एजिंग, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, so and then there are all those factors that gets involved in that part too. There is a pathology that happens in the brain for Alzheimer's, but then there are so many other things that are comorbid condition that happens in affecting the memory also. So there's a different topic in itself. Okay. But to come back to your question about the healthcare, I joined Alzheimer's association because I wanted to create more awareness about it. I wanted to go to the legislator. I want to go to the people. Okay, let's increase funding. Let's force our legislator to put some more focus and emphasis on that. Okay. So one of my role with Alzheimer's Association was also to be the ambassador to US Congress. So my role was to meet with the legislators at the state level and at the federal level, educate them what Alzheimer's disease is, what are the consequences that people are suffering, how much money is spending, not only just direct care, but the caregiver of the family, lost income. So make them aware कि इसको emphasize करें और इस पे funding करें. बिल्कुल. क्योंकि जो government fund करती थी तो वो NIH जो है वो health care पे fund कर दिया उसने, neurology पे कर दिया, cardiology पे कर दिया, फिर उसके बाद disease specific. Was it something की importance नहीं दी जा रही थी इस particular चीज़ को? Sorry again? Was it something कि जिसको importance नहीं दी जा रही थी? So जो जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं मिल रही थी, तो हम उनको educate कर रहे थे कि आप allocate इस तरह से करें, ठीक है, जब आप fund करें. Okay, we are now moving to a very short commercial break, Dr. Saab. We are in conversation with Dr. Sulaiman Lani. We are going to continue this conversation regarding Alzheimer and about some of the details कि आप किस तरह support कर सकें Dr. Sulaiman को. It's time for a very short commercial break. Let's take a break. शुगरलैंड में आ रहा है अलरब्बा वर्ल्ड फूड। 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे। अलरब्बा offers retail space for all businesses. Alrabba World Foods. For more information, call Amir Ali at 512-652-8462. सुनो,
आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल। आ गए नए मलका रेसिपी मसाले, खालिस और बेहतरीन अज्जा, मुनफरिद जायका, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। The 2019 model year in event now at Ron Carter Cadillac has been worth the wait. Enjoy our lowest payments of the year. Sign and drive new 2019 Escalade Premium Luxury for just $899 a month, or 39-month lease with just $1 down, or get 0.9% APR for 72 months. Or loyal Cadillac and competitive model owners receive $18,000 in savings. Your only Houston area Cadillac to your door dealer. RonCarterCadillac.com. When it comes to protecting yourself and your partners, all the information out there can be overwhelming. Visit our website. We are a free and confidential service striving to help you stay informed and stay notified. We are committed to a healthy Houston. मनपसंद सुपरमार्केट जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रिस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव, ऑस्टिन, टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट। Dubki, dubki, sasi dubki, dubki, sausage, dubki, dubki लगा, sasi का मजा बड़ा, dubki, sasi tomato ketchup, मजे की dubki. Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston. We are having an interesting conversation, in fact, some knowledgeable information about the things that are going on in Texas, not only in Texas, but United States maybe. Dr. Saab, before going to the break, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे about the Alzheimer thing, and as you have mentioned that you are an integral part of that Alzheimer's project as well. एलोकेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल्स इफ़ यू वुड लाइक टू टेल अस कि किस तरह आपने बताया लोगों को कि यू नो व्हाट देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस कि हम इसके ऊपर भी बात करें, इसके ऊपर भी बजट एलोकेट करें। तो वही वहाँ से आई गॉट द फील एंड अंडरस्टैंडिंग कि लेजिस्लेशन कैसे काम करता है, एंड दैट गॉट माई इंटरेस्ट कि यू नो आपने अगर कोई चीज़ें परमानेंट चेंज करनी है देन दैट्स वेयर यू नीड टू गो। यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि भाई आप you're not a career politician, आप डॉक्टर, आप शुगरलैंड में 20 साल से रह रहे हो, why don't you run for local office? And one of my passion was to actually go in legislation. That's where you make difference. That's where you pass laws. And I thought that that's where we need to go because being in the community, serving in community, we believe that, you know, a lot of people are doing a lot of service and there are a lot of gaps that they are fulfilling. आप काम करते हैं, किसी को आपने क्रिसमस पे गिफ्ट दिए, that you change their lives for 3 months, something you have given them a school or education or purpose, you given them change their life for 1 year for one person. But if in legislation, if you pass the right laws, you can change generations. And then that is our interest to go. And with that, Dr. Saab, तो education funding के अगर हमारे हम थोड़ा सा बात करें, what is the actual thing that is happening right now education funding के लिहाज से that you have noticed and the things that needs to be improved as well? So education के अंदर important बात ये है कि state needs to come up with sustainable
funding mechanism ठीक for है। public school. क्योंकि lack of resources are there, right? ऑलरेडी जो स्कॉलरशिप्स कभी कभार ऑफर हो रही होती हैं, डू यू सी दैट कि ये इट्स अ पॉजिटिव साइन, या उसकी भी क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स? See, healthcare and education are two basic pillars. Yeah. That's where the society can thrive, right? ठीक है। So we need to focus our attention in that part. अभी last जब budget session हुआ था, legislation $800 million were allocated to border patrol, and which is on top of the federal. Yeah. ठीक है ना जी? और border control is not a state issue, it's a federal issue. फिर भी 800 million वहाँ चले गए। जबकि आप education को देखिए, जबकि आप हेल्थ केयर को देखिए, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, है ना? वी नीड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एंड देन ऑल्सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने देखा कि इफ आई आस्क कि व्हाई डू यू बाय अ हाउस इन दिस नेबरहुड, इफ आई आस्क यू और आस्क एनी ऑफ योर ऑडियंस, 9 out of 10 times people will say because of the school district. So in America, does your zip code needs to dictate the quality of education your child will get? Exactly. इसके साथ साथ a very important point you have raised according to the zip code thing, and people are actually moving. Tell us some facts about and some stats जो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप स्टैंड कर रहे हैं, अभी क्या पोजीशन है वहाँ पे, and the things you are actually striving for, आपके स्टांस हैं इस पर? So the deficit in education budget is filled by local people. तो आपका property tax जो भरते हैं आप, और every year जो increase होता है, that is to bridge that gap. Yeah. Every now and then जब elections होते हैं और school bonds आते हैं, that's where the money comes to bridge that gap. सही. So I want to work to find a sustainable mechanism for the funding of our public schools. दूसरी important बात ये है कि इसमें से corporate bureaucracy बाहर निकालो and give teachers the authority and the control where it belongs. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका who is your role model? Most likely you will not tell me a celebrity, most likely you will not tell me a politician, most likely you will not tell me a movie star, but you will tell me a so and so teacher थे जो उनकी वजह से आज मैं हूँ या मैं ये कर रहा हूँ. Yeah. और how we are treating our teachers now. We are not compensating teachers appropriately. उन बेचारों को 2-3 jobs करनी पड़ रही हैं. जो अच्छे passionate, compassionate teachers हैं वो अपनी जेब से खर्चा करके चीज़ें supplies लेके जा रहे हैं. And we are losing good teachers. Texas is one of the states where teachers are actually leaving their jobs middle of the year to go for something else. दूसरी और important बात ये है कि our school system is right now focusing so much on standardized testing. सही. And we are teaching the kids to take the test. We're not teaching the kids to have a creative thinking, critical thinking to be leaders of tomorrow. It's just to pass the test. अभी इसके ऊपर काम हो रहा है. So we are creating a lot of paper degrees, but we are not creating enough creative minds intelligent brands and creative minds to be the leaders of tomorrow. So we need to give emphasis and authority back to the teachers. No two students are same. Teacher know it better than anybody else. Let them teach. Okay. So teacher आपको अच्छे teachers को attract करने हैं, अच्छे teachers को आप compensate करें ताकि वो school system में रहें. आप teachers को authority दें ताकि वो अपना curriculum बनाएं. And we need to make sure that state puts the funding in place. आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल, लाइक टेक्सास लॉटो जब शुरू हुआ था तो उसके पीछे बात यही थी कि लॉटो से जो पैसा आएगा वो एजुकेशन में जाएगा. तो जब ये चीज़ शुरू हुई तो लॉटो से जो पैसा आ रहा था एजुकेशन में जाना जब शुरू हुआ, स्टेट ने अपनी फंडिंग पुल करनी शुरू कर दी. So the pie never increased, जो actually more था बात थी. The gap is still there. बिल्कुल. And then when I looked at it on Texas Lotto, only 24% goes to education. बाकी 76% तो उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हो जाता है. Yeah, to manage and everything. आपका जो डिस्ट्रिक्ट है and early voting already जो है 18th of February I guess start हो रही है. Tell us about that, about the early voting as well. How can people support you, especially on this particular cause? Because many people would love to do that after listening to you and the things you have highlighted as well. So सबसे पहली बात तो ये है कि I am running on Democratic primary. ठीक है. So ask for Democratic ticket when you go for it, like voting. Texas is an open state, so you don't have to be registered with any party. You can go and ask for it. Let not people assume कि आपको कौन सा ballot दे दें. Ask for it that I want to go, I want a Democratic ballot. Then you will get a Democratic ballot, and then look for State Representative 26. I would be on the first page.
look for State Representative 26. My name is number 2 on that ballot. ठीक है. Our election is March 3rd, 2020. Early voting starts February 18 to 28. And that is the focus is कि भैया don't leave it on the last day. We need to come out and do early voting as much as possible. Okay, and with that, another thing जो कि हम थोड़ा सा about mention करेंगे, the remedy of taxes इसके अंदर आपने का जो stance है particularly आपने उसके अंदर बताया है make prescription drugs affordable. How do you see making drugs क्योंकि every now and then the price is increasing, so you are actually making the government to do subsidize इसके अंदर कुछ या कोई legislation इस तरह pass करवाएंगे to make it a bit lower जो prices and drugs की. See, there still a lot of things are in there. We need to make sure that we work in those lines. There are a lot of smart people in the room. We need to bring and show them what actually the reality is. Okay. And then we work to the solution. Okay? There are medications which are differently priced. There are people who are getting cheaper medicine from outside. Why can't we make it here also? Of course. And we can have some cost control on it, right? But beside that, I think what I want is to have people who are connected with their constituents. That is important. Right now, what is happening is a big disconnect. Main role of the legislator is to understand and know their constituents. Know कि उनकी क्या values हैं, उनकी क्या concerns हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, and then take that to the table and discuss that on the legislation, right? And that's what we want. You, and this is your opportunity. Actually, this is our opportunity. Because I will tell you another thing. How many South Asians are here in Texas and in this district? There's not a single South Asian right now in the legislature. Okay. Okay? So we need to make comparatively sure... Comparatively, unke bhi representative ki ek, you think it's a need over here? It's definitely a need because somebody who has to understand their values, their needs, their importance, wo kis cheez ko samajhte hain, important baat hai. And then who else? Then someone relate to as well. They relate to the problems too. Right. Who else is one of you? So the another thing that I want to bring back to politics is the empathy, person who understands and feel what your constituents feel, and the integrity, and make sure that office is transparent and available. I don't want people to think that politicians are the bosses. So that's why we say public office, matlab public servant. आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए वोट है. It should be open door and available. मैं पूछता हूँ आपके constituent, आपके who is your representative? 9 out of 10 times people say I don't know. When I asked the other side of the aisle, they said, "Oh, these people never vote, so we don't bother." We don't even bother. But I said, no. Why have you not excited them? You should touch them. They should know importance. And when I tell people, look, irrespective of your culture, irrespective of your religion, irrespective of your economic status, everybody gets one vote. So on the ballot, everybody is equal. Sahi. आपका भी उतना ही हक है जितना किसी और का है. And there are races that are won by 1 vote, 3 votes, 13 votes. In fact, Sugarland में history है कि there was one race that was won by 1 vote. Last election, Houston में हुआ, there was a race that was won by 13 votes. So every vote is important. This is our opportunity. Every vote counts. Every vote is important. This is our opportunity to make history. And I would really appeal to our community that this is our chance to make history. And I would be honored to have your trust, to have your vote, to be your voice at the Capitol. Definitely, we are going to make people as well to see as well the work you are doing. And in fact, आपके जो social media platforms है, how to contact you, अगर आप थोड़ा सा वो बताना चाहें, that people who really want to know some of the details. So a lot of information is available. Go to my website, drlalanifortexas.com. Please sign up for volunteers. We need volunteers. No campaign is complete or successful without volunteers. Of course. We need donations. If you would feel like it and you will donate any amount, no amount is small. If you live in these areas, if you live in Telfair, if you live in New Territory, if you live in Pecan Grove, if you live in Greatwood, First Colony, Commonwealth, Mission Bend, Old Sugarland area, Imperial Sugar area, if you are living by FM 1464 in Chelsea Harbor, Windsor, parts of Harvard's Green, Four Corners, you can vote for me. Any legal resident of America can donate. Of course. So if you live in Atlanta and if you live in New York and if you live anywhere, you are a legal resident, you can donate. Definitely. Thank you so much, Dr. Suleiman, for joining us in the program. It was lovely having you and we really wish you best of luck.
and we'll definitely see you after winning as well, for sure, on the set of Good Morning with NTV Houston. And this is me signing off, and we'll see you in another exciting episode of Good Morning with NTV Houston. इसके साथ साथ a quick summary about today's episode. You are definitely going to vote, and as we have mentioned, इनकी जो कुछ details हैं, you are definitely going to see. अगर आप ये episode particularly social media पे देख रहे हैं, so you can watch this on repeat as well हमारी app के ऊपर, NTV की official app, and definitely do go out for vote, do go out to donate as well. Anyone in United States can donate, which is particularly very necessary. हम बात करेंगे आपसे एक और नए एपिसोड के साथ. टिल देन, टेक केयर.